कर देते हैं। मैं खुद थोड़ी तिलावत करता हूँ फिर पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल्हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So we are going to discuss ocular trauma, and one of our professor of medicine used to say that when you look into eye, you look into medicine. He also said that when you look into eye, you look into brain. So eyes are windows to the body, and again the eyes are windows for a person to see the world. Ocular trauma is preventable, the message. So this is a diagram showing the eyelid. That is a guard for the eyeball. So we cannot overemphasize the lid trauma. This is the lid margin. Whenever we see a lid trauma, suppose a lid trauma is in the upper lid or lower lid, first of all we examine this area, upper lid margin and lower lid margin. If these are intact, we say that the injury is not so severe location wise. Once the lid margin is damaged, as in this case, it is an urgent case to repair it. Once it is not repaired, there will be notching and future problems for the tear film and the eyeball. Why? Because here is a tarsal plate. It is the fracture of tarsal plate. We have to secure tarsal plate, otherwise there will be notching, especially in the lower lid trauma. Here again we see this is the middle area having a punctum, canaliculi and the lacrimal system here. It is also damaged here once if the injury is medial. Now we have to repair all these. Once it is not repaired, there would be tearing, watering, dry eye, the cornea. The eye cannot be safe. See, we are talking and we are blinking. Spontaneous blinking is always there. So without this blinking, the cornea is not safe. And this eyelid is not just a tag of flesh, but it is a factory of glands, secretions. We all know these meibomian glands, Zeiss glands, lacrimal glands, and many more. So we have to repair it. Just not the lid margin, but we have to repair this tarsal plate as well. This is the tarsal plate. See here. This is the tarsal plate. We have to repair all these, and later on we have to bury this suture into this area. Why? Otherwise this will rub the cornea and there would be corneal infection, corneal ulcers, etc. If not repaired properly, if we just repair this lid margin and we do not repair this is the notching.
and there would be ectropion, and all other problems of ectropion are there. So he has shown that this is buried, see here, this suture end is buried into these sutures to save the cornea. Now how to classify the globe injury? After the lid we come to the globe. Again, as it is the repetition of the last, so we quickly move from here. The close globe injury. Whenever there is globe, it is due to blunt trauma. It is a flower-like cataract. This is the subluxation of the lens. This is the crystalline lens. So usually the pupil is covered by this lens, but here is subluxation of the crystalline lens inferiorly, and again this is the dislocation of the lens. Sometimes this lens comes into the anterior chamber between the cornea and the iris. Again the solution is surgery here. Same blunt trauma. This is the tears in the sphincter pupillae, and again this is the imprint of the iris on the anterior capsule of the crystalline lens, and this is irido dialysis. See, we see like two pupils. This is the normal, this is the actual pupil here, and this one is the irido dialysis. So this iris has been dislodged from its insertion. Again, open globe injury. This is corneoscleral junction, from where iris is coming out. Just having a torch, we can see that the pupil is not regular, it is not round, and this is the scleral trauma. Ciliary body or uveal tissue is coming out again, and we can guess that vitreous is also here. So the injury is involving the anterior segment as well as the posterior segment. Penetration and perforation, again the same. See, initially life-threatening problems should be addressed first, then the patient should be referred to ophthalmology. Just seeing a swollen eye, we cannot ignore its ABCs. Again, history is important in eye, and the timing is important when the patient should come. And after history, what is the object? Whether it is a vegetative foreign body that causes fungal infection, and a sterile metallic foreign body is usually that is sterile, so infection is not there. Again, occupation is important, and prior condition of the eyes, whether it was a dry eye, whether the patient had any glaucoma. Similarly, these myopic patients, if the patient is highly myopic, his sclera is usually thin, having a big globe. So prognosis is poor. What's the general health? Again, tetanus prophylaxis is important. This is again, yesterday I saw a patient in our OPD, came from Chamugad. He had a trauma. We took some videos, but we could not upload it. He had a trauma 1 week back due to this. He went to some local person and he injected an injection and gave a Polyfax to him. And he landed after 1 week in our OPD having a gross eye injury, dilated pupil, vitreous in anterior chamber. And his visual acuity was counting finger, that is below 660.
So before going to examination, again it comes anterior segment, posterior segment. So this is a beautiful diagram showing anterior to it is anterior segment. यहाँ से आगे ये सारा anterior segment है और यहाँ से पीछे ये सारा posterior segment है, ठीक है. Even anterior segment surgeons और posterior segment surgeons की differentiation अब दुनिया में हो रही है कि some usually general ophthalmologist is considered as an anterior segment surgeon. He doesn't touch this posterior segment. It needs special equipment and trained staff and really sophisticated machinery for it, for the posterior segment. Once this nucleus is dropped here, the anterior segment surgeon makes his hands up. भाई मैं कुछ नहीं कर सकता. So again this all is filled with vitreous. Even in our surgery, if this posterior capsule or the lens is spared, we are safe. And if it is not safe, and once vitreous comes and we haven't got a vitrectomy machine, so the surgeons know what is the situation at that point. Fundus of the eye. Again the optic discs, vessels, macula having the fovea, ये वो जगह है जो कॉर्निया के सेंटर के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है. सेंट्रल कॉर्निया और मैकुला या फोविया, दैट इज इम्पॉर्टेंट. और दिस इज 1.5 millimeter. द डिस्क डायमीटर इज 1.5 millimeter or 1500 microns. Again, inspection is important in ophthalmology. And this torch, this is the torch which eye people need in our 4th year as well. जब हम एंटर होते थे 4th year में तो आई वाले पूछते थे भाई टॉर्च है आपके पास, तो हम अगर किसी के पास ना होती तो कहते आप बाहर चले जाएं. ये so this torch is very important. Sometimes this torch gives an information which this slit lamp doesn't. तो इसकी अहमियत को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. टॉर्च, और एनी जीपी कैन हैव ए टॉर्च, एनी पैरामेडिकल स्टाफ कैन हैव ए टॉर्च टू सी द आई. एक मरतबा टॉर्च डालने से बहुत कुछ मालूम होता है आई में, और टॉर्च के बगैर बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं. वो भी देखते हैं क्या है. विजुअल एक्यूटी, स्नेलन चार्ट, ओकुलर मोटिलिटी, वेरी सिंपल. एक पेन हमारे पास होता है, हम सिर्फ देख सकते हैं कि भाई ये आई राइट लेफ्ट मूव कर सकती है कि नहीं कर सकती, ऊपर नीचे आंख जा सकती है कि नहीं जा सकती. अगर नहीं जा रही तो ये बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं आई वालों को. अगर जा रही है तो हम थोड़े से सेफ हैं. अगेन प्यूपिल कौन सा एरिया है, अगर हमने देखा हुआ है प्यूपिल पिछली स्लाइड्स में, ये प्यूपिल है, ये दिस एरिया, ये जो ब्लैक चीज़ है. सो दिस इज़ एन एपर्चर. ठीक है, सिर्फ उनके लिए कि ये कोई और चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक राहदारी है जहाँ से लाइट पीछे रेटिना तक जाती है, आँख के पर्दे तक लाइट इस एरिया से जाती है, यहाँ से. अगर ये राउंड है, गोल है, फिर तो ठीक है टॉर्च डालने से. अगर इसमें कोई मसला है, ये ओवल हो चुका है, तो इसका मतलब है इंजरी ग्रॉस है, फ़ौरन इसको रेफ़र कर देना चाहिए. टॉर्च ये सारी इंफॉर्मेशन देता है. अच्छा जी. सो टीयर फिल्म वेरी इंपॉर्टेंट. टीयर फिल्म के डिस्टर्ब होते ही
कॉर्निया ड्राई होना शुरू हो जाता है, और कॉर्निया के टीयर होते ही एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सेल्स, अंदर सेल्स, हम स्लिट लैम्प से देख लेते हैं। स्लिट लैम्प जो हमारे अभी आगे दिखा देता हूँ, उसको हम देखते हैं। स्लिट लैम्प, एंटीरियर चैम्बर में सेल्स हैं, डॉक्टर कहते हैं हाँ भाई इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है। एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर कौन सी जगह है? बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरस। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ये आजकल कम देखते हैं सिर्फ इसलिए कि हम सुस्त हो चुके हैं, अदरवाइज ऑफ्थल्मोलॉजी वाले भी इसको कहते हैं फॉरगॉटन आर्ट। इसके लिए स्पेशल लेंस होता है। क्यों? कि स्लिट लैम्प डायरेक्टली एंटीरियर एंगल चैम्बर नहीं दिखा सकता। और pupil and lens again. Now comes to the vitreous, retina, optic disc, macula, fovea, vessels. So this is the slit lamp. Again, ये जो फंडस और ऑप्टिक डिस्क जिस हम 90 डायोप्टर लेंस से देखते हैं, और दिस इज द वीविंग सिस्टम एंड दिस इज द illumination system of the slit lamp. It is movable. This is the chin rest. Indirect ophthalmoscopy. Again, to see the periphery of the fundus. सेंटर तो हमने देख लिया, ऑप्टिक डिस्क देख ली, मेकुला भी देख लिया, लेकिन पेरिफेरी देखने के लिए हमें इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। समटाइम्स इंट्राओकुलर फॉरेन बॉडी साइड पे पड़ी होती, सामने नज़र नहीं आती। सिमिलरली रेटिनल डायलिसिस, रेटिनल डिटैचमेंट इज देयर which we cannot see without this instrument. So simple foreign body can cause a corneal ulcer, and this is rest around this metallic foreign body. Subconjunctival hemorrhage, again the same picture, slit. Dilated fundus examination के लिए we use topicamide to dilate this. Dilated fundus examination is very important. Again, to remove this foreign body, we have the same alkane. So this is a histology of this cornea. Again, epithelium, it regenerates. No matter if the foreign body is here, we remove it, there would be no opacity. But again, here this is the descendant membrane, this is the stroma and endothelium, the most important. It never regenerate, and it is this area. This is the anterior chamber, and this area, this is the endothelium. Corneal scarring. Once the cornea is damaged, we cannot see directly with the slit lamp, so we take the dye with help of fluorescein, and we take the fluorescein dye, and now we can see the ulcer. This hole is corneal ulcer. We can miss it without fluorescein. This is the end stage corneal opacity if not treated. Again, in blunt trauma, hyphema. Hyphema is the blood in the anterior chamber. ये एंटीरियर चैम्बर है कॉर्निया और आइरस के दरमियान में। इस जगह पे जब ट्रामा हो, आइरस इज वास्कुलर, दिस इज द cerebral body, these are the zonules, this is the lens, this is the vitreous. So this is the blood in the anterior chamber. So if not treated, glaucoma is there. We know this angle, corneoscleral angle or angle of the anterior chamber is responsible for the drainage of aqueous. Once it is blocked, what happens? Glaucoma is imminent. Again, this is a picture of Irido Dialysis, ruptured globe. Again, commotio retini,
and macular hole. Once macular hole, traumatic macular hole, these are also retinal tears, same retinal tears. Orbital fractures पिछली मर्तबा डिस्कस नहीं हुए थे. Some pictures of orbital fracture are here. See here. Which one is damaged? We can guess it. Really? Here. This is the orbital floor fracture. Similarly, here. This is again the fracture of orbital floor. Yes, orbital floor. This is the inferior rectus that is impinged in it between this cut bone. Here it is much clear. Retrobulbar hemorrhage, blunt trauma, and it could be iatrogenic as well. When we give a peribulbar injection for the cataract, sometimes because it is a blind procedure, in unexperienced hands it may happen. So the eyeball is compressed and optic nerve is threatened here because of compression. So book says then you can do this procedure even in your OPD. Take simple instruments, cut this lateral canthus. This one is the medial canthus, this is the lateral canthus, and this is the lateral canthal tendon. We are holding the lid margin and going into this lateral canthal tendon and we cut it just to make optic nerve safe. It is an infraorbital foreign body. Again, this is the intraocular foreign body. This is the B scan update. Usually this vitreous, it is clear. It is hypoechoic in B scan. But this shows the foreign body and this shows the activity in the vitreous. So, traumatic optic neuropathy, optic nerve avulsion, we haven't seen yet. So, these two pictures, sometimes this is rupture of the retina and rupture of the choroid, and we can see underlying sclera. अंदर से स्क्लेरा नज़र आ रहा है. एक तो स्क्लेरा हमें बाहर से नज़र आ रहा है जो वाइट है, लेकिन ये अंदर से जब एग्जामिन करते हैं हम तो ये इस एरिया में ये जो वाइट है इसका मतलब ये है कि रेटिना इज रप्चर्ड एंड रादर दिस कोरॉइड इज रप्चर्ड एंड वी कैन सी द स्क्लेरा. Again a ruptured cornea. It needs corneal tear repair. It is really an emergency. We have to restore the anatomy of the cornea, and the visual prognosis depends upon the extent and location. If this area is safe, the patient is safe. The area overlying the pupil, if it is safe, the visual prognosis is good. If it is not safe, then the visual prognosis is poor, even after the repair. But once this is open, we have to repair it with 10-0 nylon. And if usually these are children, and children need general anesthesia for any repair. To take a foreign body from a child of 3 years, we cannot do it on slit lamp. We cannot do that without general anesthesia. Again, fluorescein. It is an intraocular foreign body.
So this retinopathy due to compression injuries of the abdomen and chest. Sometimes these people are referred to as that they have low vision, and we see this. This is cotton wool spots and hemorrhages on the retina due to compression. Otherwise, eye is okay. The eye bile is okay, the cornea is okay, anterior chamber is okay, but due to compression injury, the retina is damaged. Again, chemical injury was discussed in the last discussion. Acids, alkalis, a complete corneal vascularization and opacification. This is the result of a chemical injury if not treated. पिछली डिस्कशन में ये बात हुई थी कि सबसे पहला काम हमने पानी डालना है आँख में. So the same. So just for discussion, ये एक MCQ है. So this is very common. This is very common. Again, this is the message. This is the message. This is not just a question, it is a message. क्यों जी? केमिकल इंजरी के साथ आता है तेज़ाब. बच्चा कहता है यार तेज़ाब, उसके वालिदैन कहते हैं भाई तेज़ाब की आंखों में, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम वाश ही है. उसकी कोई हिस्ट्री लेने की ज़रूरत नहीं उस वक्त कि भाई क्या हुआ था, क्या चीज़ थी, नहीं. पहला काम ये. अगर घर से फ़ोन आ जाए किसी का भाई ये हुआ है, उनको कहें बेसन पे ले जाएं और बच्चे की आंख धोना शुरू कर दें. 15 मिनट के बाद फिर डैमेज वो होगा जो बाद में रिकवर नहीं हो सकता. This is very important. विजुअल एक्यूटी 6 है पेशेंट की. बाज़ मरतबा ग्लाकोमा इज दिए. चलें. सूर्या के एक मरतबा फिर जो है हमारे साथ आप बैठ गए. कॉर्निया इज एवास्कुलर, लेंस इज एवास्कुलर, विट्रेस इज एवास्कुलर. हाँ जी, विट्रेस इज एवास्कुलर. और इसकी वजह से जब इंट्राओकुलर इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमें बड़ा मसला हो जाता है. बाकी जगहों पे तो आईवी इंजेक्शन आप देते हैं पहुंच जाते हैं. अब ये आईवी इंजेक्शन न कॉर्निया में पहुंचता है और न ये विट्रिस में पहुंचता है. लेंस तो एक ऐसी चीज़ है कि एनी ओपेसिटी इन लेंस इज कॉल्ड कैटरेक्ट. उसको हम निकालते हैं और लेंस डाल देते हैं, ठीक है. और अगर ये विट्रिस में इन्फेक्शन चला जाए दैट इज़ कॉल्ड एंडोफ्थल्माइटिस. एज द नेम सेज एंडोफ्थल्माइटिस. आई गई है, आँख चली गई, लेकिन उसको फिर जो है इंट्राविट्रल इंजेक्शंस हमें लगाने पड़ते हैं क्योंकि दैट इज़ एवास्कुलर. और यही आई की ब्यूटी है. एवास्कुलर होने की वजह से ही ये ट्रांसपेरेंट हैं. अगर ये वास्कुलर होते तो ट्रांसपेरेंट ना होते. और ये जो एंटीरियर चैम्बर है ये तो इसमें तो एक्वस ही है सारा, ये पानी ही है. और कॉर्निया की जो एंडोथीलियम है वो यही काम करती है कि कॉर्निया से पंप आउट करती है जितना पानी आ जाए. हम सर्जरी के बाद भी जो एडिमा होता है, कॉर्निया के एंडोथीलियम अगर इंटेक्ट है तो पंप आउट करती है उसके अंदर से जितना भी पानी है. थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर ये हाइड्रेट हो जाए तो इसका कलर ही चेंज हो जाता है. वूंड्स को क्लोज करने के लिए बाद मतलब हम कॉर्निया की साइड पे थोड़ा सा उसको हम कहते हैं उसको हाइड्रेशन करते हैं. उस हाइड्रेशन से ये फ़ौरन वाइट हो जाता है.
लेकिन एंडोथेलियम दोबारा अपना काम करती है और अपना इसका जो पंप है एंडोथेलियल पंप्स। इनडायरेक्ट थर्मोस्कोप आपके पास है नहीं है जो आपने दिखाया था? इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप हमारे पास है, ये जो अभी रिसेंट लास्ट परचेजेस में आया है। हाँ जी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है हमारे पास। इस वक्त जो है, एक तो जनरल एनेस्थीसिया नहीं है, एक बात जो अहम है, जो मैं समझता हूँ, देखिए किसी को भी किसी वक्त आई का ट्रॉमा हो सकता है। मतलब ये कि जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि हमारे पास माइक्रोस्कोप भी उसी जगह पे हो, हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी वहीं पे हो, हमारी स्टेरिलाइजेशन वहाँ पे हो, और वहाँ पे एनेस्थीसिया भी हमारे पास हो। एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और दूसरी ये कि पोस्टीरियर सेगमेंट में हम जा नहीं सकते, एंटीरियर सेगमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स मेनली हमारे पास हैं, स्पेशली एज फार एज द ट्रामा इज़ कंसर्न। ट्रामा के पेशेंट के लिए एंटीरियर सेगमेंट का जो ट्रामा होगा वो हम डील कर लेते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बच्चों के लिए अगेन ये इज़ इम्पोर्टेंट। आप इन कभी ऐसी इमरजेंसी बढ़ जाती है तो आप अपना स्विफ्ट लेंथ लेके आप इधर या नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों कि एक मरतबा अगर नहीं बताता हूँ, उसमें ये है कि एक मरतबा माइक्रोस्कोप का कोई लेंस हिल गया, हमें दो नज़र आएंगे, हमारी सर्जरी फिर जो है कर नहीं सकती उसके बाद। हाँ, एनेस्थीसिया मशीन उठाई जा सकती है, कोई सर्जरी कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो एक एनेस्थेटिस्ट कहीं से उठाना है और एक एनेस्थीसिया मशीन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये है इम्पोर्टेंट। क्यों जी वज़ीर साहब? हाँ जी, ये है। बाकी जो है अभी आपके पास सिर्फ एक इशू जो रहता है वो एनेस्थीसिया का रहता है जी। हाँ जी, इमरजेंसी के लिए। बाकी आपके पास सामान की नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी, आई की आज की जो सर्जरी है दैट इज़ फेको मशीन। फेको हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। हमारे पास इस वक्त लेज़र्स हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो भी पेशेंट हो, उसको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, तो हमें इसको हम डील कर सकते हैं कि आर्गान लेज़र हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे ही ये एक लेज़र है, कैटरेक्ट करने के बाद झिल्ली आ जाती पीछे, उसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। माइक्रोस्कोप है हमारे पास वो, अच्छा, लेकिन हमारे पास कमी फेको मशीन की है, ठीक है जी। ऑटली की फेको मशीन वो हम किसी भी फोरम पे हमें बात हो तो कर लेते हैं। लास्ट में वो WHO वाले आए हुए थे, तो सारों में मैंने फिर यही कहा कि हमें इसकी ज़रूरत है फेको मशीन की, क्योंकि उसके रिज़ल्ट डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर जो है हम स्टिच नहीं लगाते हैं, कई चीज़ें हैं बहुत सारी। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह मिल जाएगी।